Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very good morning, good afternoon, and good evening for all the participants and the joiners who are watching this program today. It's another episode for Technovation with Ahmad Jawad. Today we brought a topic of privacy evolution, the right usage of protected content. As you all know, CxO Global Forum is an emerging knowledge sharing platform for global thought leaders to help and build an global impact in technology, disruption, transformation, and innovation. CxO believes in change, and that can be done by bringing thought leaders from all walks of life to drive toward greater knowledge economy. As we know that today, due to the technological evolution, we have a lot of challenges which are being faced by the communities, people, governments, citizens, and everyone who are. Technology is impacting our daily life these days. The impact of security and privacy breaches on the continuity, sustainability, and the profitability of the organizations around the globe is clear. Considering the sensitivity related to the data privacy, organizations are looking to prioritize privacy-related initiatives and struggling to implement an effective means and frameworks to obtain required objectives. In order to understand how the privacy-related challenges can be dealt in a more effective way, we have a panel of experts today, and I would like to invite our first guest, Mr. Mujtaba Tariq, who is the CEO and for CMC mtech. Welcome, Mujtaba, on the show. Thank you for having me, sir. Thank you. And I would like to invite my second guest, who is Mr. Rizwan Akhtar, who is the CTO of Inbox Business Technologies. Very warm welcome, Rizwan, sir. Thank you so much for having me. Thank you. And the last guest, Mr. Hussain, who is the founder and CEO of Boundless Technologies. Very warm welcome, Mr. Hussain. Thank you very much. Bahut shukriya. So, without any further ado, I just would like to directly jump on my first question. Today, we have a different understanding of privacy today among different societies and different professions and so forth. But the reality of the life is that everyone is being impacted with these, the breaches, the way we are using our handheld devices, the technology gadgets and so forth, without having appropriate awareness of how these gadgets should be used effectively and in a secure way. So let me start with my very foundational question to Mujtaba, that what do you think, that what's in your opinion, what is the data privacy and normal people should know about it? Thank you very much, Amisa, for giving me this opportunity to speak about privacy. So generally speaking, privacy includes, the basic right to be free from interference and intrusion of any kind, to associate with whom you want and whom you don't. So to be able to control who can see your personal information about you, about the stuff that goes online through social media, through our mobile devices, through all other digital channels. So if we talk about data privacy in terms of आम बंदे की जुबान में अगर आप उसको कहें कि in layman terms, so it's a topic जो बहुत ज़्यादा आजकल in hot waters है, and we keep on hearing कि फलाना डेटा एक ब्रीच हो गया, फलानी जगह के ऊपर से डेटा चोरी हो गया, but we never think
कि वो आम जिंदगियों को किस तरह से इफेक्ट करता है, सोशल मीडिया यूजर्स की जिंदगी को, मेरी जिंदगी को, मेरी फैमिली की जिंदगी को, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जिंदगी को, बिकॉज इट्स जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि यार बस फोन नंबर ही तो था जो किसी के पास चला गया, मेरा फोन नंबर किसी के पास होगा तो उससे क्या हो जाएगा, you know, or if someone has my CNIC, so उससे क्या हो जाएगा. So usually, you know, privacy के अंदर हम बड़ा एक चीज जो कर रहे होते हैं वो हम अपना ID कार्ड कभी भी किसी को भी दे देते हैं. And you know, I've heard a lot of people then whenever we go to a petrol pump, so हम जब उसको कार्ड पास ऑन करते हैं तो हम उसको कहते हैं यार पेन ये लगा लो खुद ही, ठीक है, and that's where it goes wrong. और यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं उस एक पर्टिकुलर डाटा के साथ. सो फॉर मी डाटा प्राइवेसी इज you know, it's a very crucial part of our lives these days because every other person is 24/7 available online, no matter if you're sleeping or not. So आप 24 घंटे अवेलेबल हैं ऑनलाइन किसी न किसी शक्ल के अंदर. Even while we sleep, we are you know, wearing a device जो हमारी sleep tracking कर रही है. It keeps on collecting information about your health, and it's going to be saved somewhere in a cloud, and that information can be used against you know, your health or your health insurance policies. So everything is related with everything. So it's very important to take care of the information that goes online about yourself, and you know, as an individual or any or as a, you know, organization, it's equally important to take care of the privacy. And I think down the road, जैसे हम progress करते हैं अपने session के अंदर, I'll be discussing some of my experiences, and जो being a company owner जो social media को deal कर रहे हैं या e-commerce businesses को deal कर रहे हैं, या हमारी जो overall agencies इस वक्त जो challenges face करती हैं within Pakistan, और उनका right way of usage क्या है. I'll try to explain it further. No, that certainly, man, we'll come back to that. Man, thank you very much, Mujtaba Sahab. You highlighted actually a very important point of controlling your personal data. So, Rizwan Sahab, what's your take on this thing? And what's your opinion? Like, what should be the normal understanding? Because Mujtaba Sahab ne kafi different aspects mein highlight kiya in cheezon ko. How do you think these challenges are? Actually, Mujtaba Saab has covered it pretty well, but there are certain aspects which actually relate to the terminologies that are basically involved in all of this. So when I talk about data privacy, I would consider it within the overall realm of you know, data security. It's related primarily to handling of information based on its significance. And on that also, if consent has been obtained, whether the consent relates to actually being able to use that information, then there are certain regulatory obligations as well, and the overall you know, public expectation of privacy. So it's a pretty broad spectrum, but the important thing is when we talk about human beings, privacy is actually a basic human right, and that is where the line has to be drawn. So whenever we talk about privacy, whether it is data privacy or any other form of privacy, we have to respect basic human rights in this regard. Personally identifiable information is something that has been you know, established as the basic line in this regard, and we categorize certain information as personally identifiable information. It's very fascinating that the existing definitions of personally identifiable information, or PII as we call it, they're evolving with the use of social media, with the use of other means, especially with the involvement of open source intelligence. An image that you post online, the kind of information that you can get from it, these things are there very relevant. So
as individual users, there are certain connotations to data privacy, primarily the human rights. And as corporates or as corporations, as businesses that are handling the data of individuals, we need to understand the regulatory aspects of that and how to protect it. Because after all, the customers' data that we are handling, we are thriving our business on the basis of that. So we have to protect that as well so that we maintain the overall expectation of privacy of our customers. Indeed, indeed. When the regulators have to play a very important role, and then more significantly, the related regulations and the laws which they need to develop and drive from a protected economy point of view. That certainly will come back on that one. I just need to collect Hussain's opinion on how he thinks that digital privacy, the realm, needs to be understood among the society. बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका दोबारा से almost all the topics covered by Mujtaba and Rizwan sir is very well. But मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू पे एक दो आपकी नजर डालना चाहूँगा. हमें सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि डाटा और प्राइवेसी एग्जैक्टली है क्या और उसमें लोग क्यों उसमें प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और वो डाटा शेयर करने के बाद उनके साथ जो है बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो होते हैं. नॉर्मली हमें अपने डाटा की या अपने क्लाइंट के डाटा की बहुत ही कम हमने वैल्यू की हुई है. तो उस वैल्यू को समझने की जरूरत है कि जो आपका जो कंटेंट है, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकेंडली जब आप किसी कंपनी के साथ डील करते हैं, उसका कंटेंट, उसका जो डाटा आपके पास होता है, वो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो टेक्निकली वो आपके एसेट्स होते हैं, कंपनी के एसेट्स होते हैं, उस पर बहुत थाउजेंड्स और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. उसके बाद वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो फिर डाटा वट एवर रीजन लीक हो जाता है, ड्यूरिंग कोई हैक अटेम्प्ट्स हो जाते हैं या प्राइवेसी के रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो डाटा लीक हो जाता है. तो उसका बड़ा ही मिस यूज जो है वो लोग करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं. तो मैं सबको गाइड करना चाहता हूँ कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रॉपरली लर्न करें और किसी भी अनवांटेड जगह पे अपना नंबर, अपनी चीजों को जो है वो इस तरीके से पब्लिक ना करें. और एक सजेशन इसमें नॉर्मली होता है कि अपना पब्लिक डाटा और अपना पर्सनल डाटा को सेपरेट रखा जाए, नॉट दैट कि हम दोनों को मर्ज किया जाए. उसमें नॉर्मली होता है कि जब डाटा वहां से लीक होता है तो फिर वहां पे आपको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं. Thank you so much for your opinion. Certainly, मतलब यहाँ पे जो वक्त की जरूरत है वो ये समझने की है कि हमें जो सेंसिटिव डेटा है उसको किस तरह से टैकल करना है. जैसे रिजवान साहब ने very rightly said कि PII needs to be understood. Any information which leads to your personal identification needs to be shared in a very responsible manner. और especially जिस तरह मुजतबा साहब ने बहुत एक important point highlight किया था कि the right to be controlling the PII. So you should be able to control the PII with the help of the consent management process. लेकिन एक जो पॉइंट जो नुकता मैं समझने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मैं मुजतबा साहब से गुजारिश करूँगा उस पर रोशनी डालें, वो ये कि data privacy per se, what we understood is keep protecting the PII, the sensitive information. Yeah. So अब जब हम different scenarios पे बात करते हैं कि how in what scenarios we should generally face such things where we need to put an extra care while sharing the information ahead. जैसे आपने example दी कि petrol station में हम अपना वो CNIC share दे देते हैं और without very irresponsible. So what regulators have to take part in this thing? Because it has to be taken up, a very proper legislation needs to be laid down. उसमें एक role judiciary का भी होता है, law, because any privacy breach happen and all the unethical stuff happens, उसमें जो impact legal stuff है वो भी play करता है. तो इस पूरी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? Exactly, sir. You rightly said that यहाँ पे regulators का बहुत लेन-देन है, and उससे पहले I would like to add something to it, that data privacy and data protection they
वर्क साइड बाय साइड, ये दो चीजें थोड़ा सा लोग ज्यादातर जो है वो एक ही तरह समझ लेते अगर हैं। एक इजाजत हो में कथाकलामी मामूल, it's technically it's a different things कि आप data protect या कर leakage, and then the एग्जैक्टली, privacy is more broader in terms of a business perspective. So when we talk यस about the एग्जैक्टली, privacy, we talk about information in general, you know. So यस यस दोनों perspective में आप अपनी जो है वो अगर राय का इजहार करें तो yes, yes, for sure, sir. So जहाँ तक regulatory या law की बात है, so Pakistan has एक छोटा सा इन्होंने पाकिस्तान ने effort की थी in 2016, और वो हुआ था पैका के नाम से, if you're aware of it. तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ और शेयर करूं, that for ordinary user of any digital space, या जिस तरह हमारे different fintech के startups हैं, या हमारी किसी भी किस्म की digital space आप कह लें, where we are sharing our personal data, we should be aware that where this particular data is being used and why it's a requirement for that particular organization that we provide that particular information to them, okay, and how they're going to use it. So it's like ये हमारी वो एक self education के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then we'll be able to listen to a law, या हम पढ़ेंगे उसके बारे में और investigate करेंगे. अब जैसे पैका के बारे में मैं जब भी मैं अपने कभी दोस्त अहबाब में बैठता हूँ जो इतने ज़्यादा टैक्स हैवी नहीं हैं, they are not aware of it, ठीक है, और they don't even aware के एक छोटा सा यूनिट है FIA का NR3C के नाम से, जो इस सारी चीज को जब खुदा ना खास्ता जब कुछ हो जाता है तो उसके लिए they're out there, और I was part of it, so मुझे पता है, तो मैं उनको जब बताता हूँ, so they're not aware of it because it's a they national think कि cert यार वो क्या if you करेंगे. call it as, you know. मैं Sorry? कह रहा था NRC it's a national cert, मतलब जो incident response team जो है, अगर in case of any such thing happens, so they can respond to that. Yes, we can complain them कि भाई हमारी आप ये फाइल कर लीजिए. So I'll talk about it later कि वो क्या करते हैं and how effective they are, ताकि जो आम यूजर जो विक्टिम होते हैं किसी भी किस्म की डेटा थेफ्ट का या प्रिवेसी पॉलिसीज की, जहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है, उसके अंदर वो क्या एक्शंस लेते हैं. तो रेगुलेटरीज आर देयर. अब जिस तरह पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक ये जो क्राइम्स एक्ट है 2016 पैका, उसमें बहुत ज़्यादा पिनलाइज भी किया गया है, बहुत सख्त सज़ा भी है कुछ केसेस के अंदर, और बड़े hefty फाइन्स भी हैं. छोटे छोटे फाइन से शुरू होता है. इट स्टार्ट्स विद 50,000 rupees for a small breach, and it goes up to like 10 million rupees and 5 years of imprisonment. So regulatories जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो दो हैं मेजर जो पाकिस्तान के अंदर हैं. If we talk about typically about Pakistan, we will also talk about global laws like GDPR वगैरह और वो सारी जो चीजें हैं. But पाकिस्तान में the supervising authorities are PTA and FIA that takes care of this kind of breaches. So yes, we need to educate individuals and organizations about data privacy and how it should be used. And they should also know that why their data is being collected by some organization. So if they're aware of it, that if a petrol pump guy, or if a ice cream company is asking for their phone number, why are they asking it? And do we need to provide this information to them? Are we aware enough about our privacy that should we be giving this information without any question about it? या वो आपसे आपका घर का एड्रेस मांग लेता है, तो we just pass it on कि हाँ यार ये ठीक है, ले लें, किससे क्या होएगा. So as per some research, you can even identify a person without their name or their actual identity by three major factors. If you know their exact address, if you know their date of birth and gender, you can identify that particular person without even knowing their specific name, because वो आपको कुछ algorithm से पता चल जाता है.
So this is something that should be, communicated by the authorities, by judiciary. वो तो एक पे penalize वाला part आ गया, वहाँ पे जो laws बनाएंगे या जो implement करवाएंगे उसका आ गया. But before that, I think it's a personal thing for any individual or any organization to understand the importance of privacy. Right. So, as you rightly said, there is a serious need to enhance the awareness of the privacy-related challenges and issues and how to address those. तो उस पे हम आज Yes. इस क्वेश्चन के बाद आते हैं. Basically, I just want to continue pushing the same question to Rizwan sir. How do you think in Pakistan in particular regulators का role जो है अब तक कैसा रहा है, or what further they need to do in order to strengthen the privacy mechanisms to minimize the breaches around in the society? Yeah, it's a very pertinent question, and there's a lot to unpack over here. And moving forward with what Mujtaba has said, yes, there are laws. The laws are the most superior form of regulatory process. Beneath that, the policies, the rules, regulations, etc. All of that does exist. But we need to actually understand the technological landscape over here, right? So social media has actually changed many things. And with Mujtaba having a background in FIA and R3C, cybercrime wing, etc., he must have had the experience of actually trying to investigate something of this sort. And I know because I also have a partial similar background. The thing is that it's very interesting what is being done. Protection of privacy is actually the responsibility of the governments, right? And it is guaranteed through various UN charters as well as the Constitution of Pakistan. But through the use of consent, when you click "I agree" underneath any, you're giving consent. The consent has been obtained from users, and the social media companies then have acquired the right to use not only the information that you're volunteering, but also PII, which really extends to many other aspects as well. And this information is being collected around the world in various legal jurisdictions. So the entire regulatory process is being put to question that where does it exist? How can it be done? And there is no government oversight on the consent process. And Mujtaba would agree with me on that if there is no oversight on the consent process, then how can you raise a complaint against a privacy breach by a company which is under the jurisdiction of California law, right? So this is the kind of situation. And by the way, these private enterprises that, I'll not name any of them, they have their entire business models built upon harvesting data, right? Yes. And they're being expected as private enterprises who are profiting from using our data. They are being expected to protect our privacy, and the governments can't do anything about it. So I'll talk about two very interesting, very briefly, I'll talk about two very interesting examples which are very current. First of all, the takeover of Twitter by Elon Musk, the revelations that are coming out, the information that is coming out. Was any privacy policy that maybe as a user of Twitter I signed up for, did it cover the change of ownership of that company? Does it answer that question? Does any regulatory framework of our country answer that question? It does not. And then there is another aspect. There's a second example that I would really like to stress upon. It's the overarching surveillance through apps of which are actually doing off-app activity collection, right? So one application is collecting data from other applications as well and correlating it, right? So when you talk about your PII, it's being put together. All the pieces of the puzzle, they're being put together. So this is a very different landscape that we're talking about. The simplistic definitions of privacy, they're being challenged, right? And I believe as the discussion progresses, we can talk more about this. Right.
So, since I would like to add on this thing, when the role of regulators, as you rightly said, Rizwan sahab rightly said, कि different regulations exist to karte hain, but how it's been practiced and respected. Twitter ki one example samne aayi. If you would like to add more on this. राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में भी जो इन प्राइवेसी प्रोटेक्शंस पे काम कर रही हैं। मैं भी एक चीज़ पे तवज्जो दिलवाना चाहूँगा प्रोटेक्शंस के हवाले से। आई एम वर्किंग विद द डिजिटल एजेंसी विद लास्ट 22 इयर्स। तो हम एक छोटा-सा बिज़नेस करते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशंस का, राइट? अब वो डोमेन रजिस्ट्रेशन की प्राइवेसी के बारे में आपको बताऊँ, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द मार्केट। मैं ऑलरेडी पाशा के साथ और पीसैप के साथ कनेक्टेड हूँ विद दिस सेक्शन के लोग डोमेन अपने नाम पे करा लेते हैं। अब वो डोमेन अपने नाम पे आपने करा लिया, एज़ अ एजेंसी आपने अपने नाम पे करा लिया और वो सामने वाला कोई फ्रॉड करके चला गया तो आपके पास क्लेम आ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि डोमेन लेने के बाद आपको डोमेन रिलीज़ नहीं करते, आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने एफआईए में कुछ केसेस भी देखे हैं इस तरीके के, कि वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार मेरा आपने एसेट ही ले लिया, आप मेरा डोमेन ही नहीं दे रहे। वो क्यों नहीं दे रहे भैया? आप हमसे डिज़ाइनिंग करवाएँ, आप हमसे ही काम करवाएँ ताकि आप हमारे साथ बिज़नेस हमें कंटिन्यू देता है। तो मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो डोमेन्स हैं, जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 100% जो है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। आप जब भी चाहें उसको क्लेम कर सकते हैं, व्हाटएवर आप उसको चाहें .com से करवाना चाहें, .com.pk से करवाना चाहें। एक सॉल्यूशन है एक बॉडी का कि आप उनको डायरेक्टली मेल करें और अपने डाटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं बआसानी। मगर डेफ़िनेट हमारे पास अभी भी गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो बिल्कुल ईज़िली इस चीज़ को इंडिकेट करे। अगर आपका वो डाटा किसी ने रख लिया है, तो आप अपने लेवल पे ही जाके लड़ाइयाँ करें और उससे बात करें और आप उससे वो डोमेन या कोई ईमेल या कोई पासवर्ड आप उससे ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ों को अपने पास ही रखता है। तो ये गैप है मार्केट में, जिसको मुश्तबा साहब भी जो है वो वहाँ पर इसको कोई लॉन्च करें, कोई ऐसी बॉडी बनाएँ कि जहाँ पे ईज़िली लोग अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करें और विदिन 1 आवर, 2 आवर उसका जो एक्सेस है वो मिल जाए। इनफैक्ट हमने बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ के साथ काम किया है। अभी हम एक और क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जिसका फेसबुक का जो पेज है वो किसी ने क्रिएट किया था और उसके बाद वो पूरा डाटा उनका लेके चला गया। वो बंदा उसको ना पासवर्ड दे रहा है, ना चीज़ें दे रहा है। तो डेफिनेट ये उस कंपनी की कंटेंट था, उसका सारा डाटा था, जो सो लॉस कर गए, जिन्होंने हज़ारों रुपए लेके उस पे ट्रैफिक जनरेट किया था, सब किया था, वो उनको नहीं मिल रहा। अब वो ऑब्वियसली हमारे पास कोई एक सेंट्रलाइज़ बॉडी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार ये मेरा पेज लेकर चला गया, ये मेरी कंपनी का पेज है, मैं रजिस्टर्ड कंपनी हूँ, मेरे पास एनटीएन है, सब चीज़ें, मगर डेफिनेट वो आगे-आगे और हम पीछे-पीछे और इस तरीके के बहुत सारे सर्वाइवल जो हैं मार्केट में मौजूद हैं। हम उनकी बड़ी कोशिश करते हैं, हम जो दूसरी एजेंसी होती है उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखें अगर कोई पागल आपको टकरा गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लॉ जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान में स्पैम का लॉ भी मौजूद है। अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा किसी को ईमेल कर सकते हैं, सेकंड दफ़ा ईमेल करने पे वो आपको क्लेम कर सकता है, आपकी ईमेल को ब्लॉक करवा सकता है, आपके डोमेन को ब्लॉक करा सकता है। मगर डेफ़िनेट उस लॉ तक पहुँचने के लिए हमको यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मसाइल हो जाते हैं। हम बोलते हैं हमें तो नहीं जाना भाई वहाँ पे, तो हम तो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। मगर ये कि अगर इस तरीके का कोई सेंट्रलाइज़्ड बॉडी हम बना ऑन द CxO ग्लोबल फोरम से हम कनेक्ट करके उसको बना सकें कि अगर आपका डाटा लॉस कोई करता है, प्राइवेसी का डाटा कहीं पे आपका फैच करके लेके जाता है, तो आप उसको क्लेम करें, अपने डाटा को रिकवर कर सकें और साथ-साथ उस डाटा की एक एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो कि उसको यूज़ ना किया जाए। वो उसी कंपनी का कंटेंट है, उसी कंपनी का जो है वो डाटा है। तो मुझे लगता है ये छोटा-सा मार्केट में एक स्पेस है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है एफआईए के अंदर और सारी पुलिस के अंदर भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर डेफिनेट उसका जो रास्ता है उसको आसान बनाने की ज़रूरत है। नॉट दैट कि हम कहें कि जी डिपार्टमेंट तो है, मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग जाना नहीं चाहते वहाँ पे। मतलब एक एक जो वो फेयर है ना, वो जो बैरियर है हमारे और उनके दरमियान, वो एक एग्ज़िस्ट करता है। तो अगर कोई इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म बने कि लोग ईज़िली कंप्लेन करें और ईज़िली लोगों के डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाएँ, तो एक ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी हमारी कंट्री की कि हम उसको कर सकें। सर। Thank you so much for the very detailed, insightful guidance. The thing is, what I personally feel, there are regulations available. There are the departments who are responsible to take actions on such things, but it's not been driven in a very mutually agreed upon process or agreed upon strategic way, where there's a responsibility on the citizens as well, not only on the institutions.
So the citizens has to take up a right, the ingredients before going and reporting it and claiming an incident and so forth. So, man, just to connect the discussion which have been said so far, कि मुझतबा साहब ने डिस्कशन के स्टार्ट में बहुत important point highlight किया था, controlling your own personal data. और Yes. जैसा कि रिजवान साहब ने very rightly said कि consent management is a process which should be owned by that regulator कि जो collect करता है, जो data data controller है वो consent को collect कर रहा है, and there is a variety of the options the data owner can take, such as a citizen has a right to be forgotten. अगर मतलब उसको अगर data अपना किसी company में नहीं रखना, then he has to take a sign on a consent कि मेरा data needs to be deleted after first use or after 2 years and so forth. तो मुझे सब what's your take on this? ये primarily in Pakistan में जैसे बहुत बड़ा खला तो है, हमारे challenges हैं understanding के public में, लेकिन कौन से institution actually have a shape which along with judiciary should take a lead on this thing? Exactly, sir. Rizwan साहब ने बहुत अच्छा एक point highlight किया था कि laws are there, authorities are there, but nobody is taking responsibility to take action against those violations जो होती हैं throughout the period. And जिस तरह हुसैन साहब ने बोला, ये हमारे साथ भी कोई 500 दफा हो चुका है कि हमारे क्लाइंट्स का जो डाटा है वो किसी के पास होता है और वो फिर किसी से निकलवाना पड़ता है. एंड वी आल्सो यूज सम अदर वेज टू स्पीड इट अप. हैं पाकिस्तान में कुछ इदारे इस तरह के, जैसे IPO है या SCCP है, they help us a lot, and they're quick in response as well. But again, कुछ cases के अंदर they're not. So अब तो even पाकिस्तान में जैसे पहले आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाते थे, so there was no law to attach your domain name with it. But now you can, even link up your domain name with it. But it totally depends that before you registered your brand, it was with some other guy जो अब आपको देने के लिए नहीं है राजी. So वो जो domain brokers होते हैं वो फिर उसको महंगे दामों में बेचते हैं. So again, it comes to an individual level कि हमें देखिए हम सब चीज गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते, because data privacy belongs to yourself first, and then फिर protection की बात आएगी, and then फिर prevention की बात आएगी कि जिसमें we will talk about other prevention measures कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है. But I would like to add one thing here, sir. जिस तरह आपने दोबारा बात की judiciary की, अभी recent past के अंदर if we see कि हमारे political ecosystem के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा problem create होने लगा कि हमारी बहुत sensitive personal information leak होना शुरू हो गई, and it's not even restricted to that particular segment. I came across during my service a case के जिसके अंदर some very sensitive data about women and kids was leaked, or that particular data set was sold by someone to an organization, to an organized criminal organization जो के human trafficking में involved थे. So पाकिस्तान में से बहुत ज़्यादा लोग जो हमारी एक ये illegal immigrants होते हैं, जो migration होती है, उसके थ्रू वो उनको बाहर लेके जाते थे, and then वो ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेडिंग और वो होती थी, and that was all based on that particular personal data of people, जिसमें मेडिकल डेटा भी था, जिसमें उनका पर्सनल डेटा भी था. So see, इसकी sensitivity is way too much. अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम तो शायद सारा दिन बात कर सकते हैं इसके बारे में, and शायद ये वाली meeting is quite short for that discussion. But yes, you're right कि हमारे पास जो authorities हैं वो वाकई में, because I have been into the process, मुझे वो पता है सारी चीजों का, they always try to do their best. Obviously हमारी प्रायोरिटी डाटा प्रोटेक्शन की अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत लो है. यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले देखी जाती है कि हमारे पास माल है या नहीं बेचने के लिए टू आवर कस्टमर्स, बट जो हमारा कस्टमर है, देयर डाटा इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग टू देम.
So it's our responsibility, being social media companies or organizations, to protect the data of our customers, and it's their own responsibilities as well कि जो information वो मेरे साथ share कर रहे हैं, is it relevant? जो भी मैं उनके साथ share कर रहा हूँ. So that is again ये फिर वहाँ पे वो regulatory वाला part आ जाता है, laws को enforce करवाने के लिए. तो फिर again there are so many organizations. Most certainly रहेगा, because that's that pivotal core component of any privacy, the system, management system. अब जैसे कि आपने बहुत तफसील से बताया कि the thing is that everyone has to take a part or play a part in this thing in order to ensure the privacy is respected. So digital ethics guidelines needs to be shared in order to enhance the awareness around the society, within the society, and around the corporates as well. And it should be enforced, in my opinion. But however, Rizwan sir, ये जो regulator वाला जो issue है, अब इसमें मैं अगर आपसे गुजारिश करूं कि मुझे एक आम आदमी को इस हवाले से, या स्पेशली हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, if they face any privacy breach as well, जब when they report to the authorities, हमारा जो judiciary or legal system है, they have not yet properly legislated के जो crime evidence है जो उनको produce करना है, how they should, उसकी acceptability level क्या है, in what form and so forth. तो क्या अभी भी जरूरत है हमें कि हम we need to relook at our related regulations along with judiciary in order to improve and strengthen the privacy protection means in the society? Yeah, absolutely. I mean, first of all, regarding the breaches, let me just highlight one particular thing. It's very important to understand that not all privacy breaches are even known, right? So there could be many privacy breaches happening and nobody knows about them, right? So that's the first horrific statistic that we need to understand. The second thing is that when you want to actually, talk about the regulators and their role and who to go to in the event of a breach, we need to understand how the law works over here in Pakistan. And as I've already highlighted, the challenges when it comes to dealing with the social media. But there are certain processes that can be done. First of all, when we talk about individuals, we need to actually, there are many things that we can do, to first of all protect ourselves, and then which is the primary thing. And then as corporations as well, we need to actually, implement processes that involve the people, the basic triad of people, technology, and the processes. So you have to put all of that together. You have to build awareness. You have to have a privacy strategy in place. But breaches do happen. And when breaches happen, there are basically, in my understanding, there are two ways of going about it. One is the service provider under which the breach has occurred. So you would have to primarily go to them to understand and to get the primary evidence. So if your breach has occurred through social media, then there are certain ways of representing to the social media service providers to actually do that. I'm happy to observe that Google has opened their office over here. It will ultimately evolve into some other aspects of regulatory compliance as well. So that is one thing. But when other than that, if we talk entirely about Pakistan, then as Mujtaba has already said, FIA is Cybercrime Wing for cyber breaches. They have an online portal, and for telecom related breaches, you do have the portal of the Pakistan Telecommunication Authority, and you also have the National Commission for Personal Data Protection of Pakistan. You can also approach them as well. So depending on the scale of that, there is a process that exists. Now coming over to the judiciary and the actual prosecution of that. So the law, as already been pointed out, PICA has penalties. One particular challenge I'm sure that Mujtaba would have faced is the awareness of the
the claimant, the awareness of the lawyers prosecuting the case, and the awareness of the judges to actually understand the implications. वो जिस तरह कहते हैं ना कि हदूद और हदबा उसका पूरा समझ आए, to actually understand that and to actually take it to a logical conclusion. I believe that's one of the biggest challenges currently. Yes. So it's a complete vertical, even if the laws and the regulations are in place, the ability to actually take somebody to task for a breach, that is something that is still a huge challenge currently. Exactly. I think when वहाँ पे ही जो national cert sort of institutions हैं या वो that they have to play a role in terms of coming and preserving the evidence, collecting the evidence, and then producing to the court so that they can reach to some logical conclusion, which is mutually acceptable. So, considering the shortage of time, I just need to rush on the last minute. Hussain sir, आपका last opinion on the role of regulators, how they can contribute more in strengthening these privacy management systems. मैं इसमें थोड़ा सा जावेद साहब, वैसे तो माशाल्लाह रिजवान साहब और मुस्तफा ने सारी टेक्निकल चीजें कवर कर दी हैं. मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा लोगों को कि आप किस तरीके से डाटा को प्रोटेक्ट करें और किस तरीके से आप उसमें सेफ रह सकते हैं. नंबर 1, आप डू नॉट ट्रस्ट एनीवन. आप किसी पे ट्रस्ट ना करें. नंबर 1, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉर्मली होता है ये कि हम अपने एम्प्लॉइज पे भी ट्रस्ट ना करें, इन द सेंस ऑफ कि जब हम बात कर रहे हो डाटा की, भले ओबियसली अगर वो हमारा एम्प्लॉय है तो हम उस पर भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि एम्प्लॉइज से ही जो है वो डाटा ब्रिजिंग स्टार्ट होती है और वो फिर आगे की तरफ मूव ऑन होती है. नंबर 2, आप जिस भी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, जब आप किसी भी जुडिशरी में जाते हैं, क्लेम के जाते हैं, तो आपसे कुछ ना कुछ प्रूफ मांगते हैं. तो नंबर 1, आप जब अपना डाटा किसी के साथ शेयर करें तो नंबर 1 आप उनके साथ एक एनडीए साइन करें. इट्स अ वेरी स्मॉल डॉक्यूमेंट. आप खुद भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. ओवर द नेट भी आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं एनडीए के. नॉन डिस्क्लोजमेंट एग्रीमेंट ये कहलाता है एनडीए. तो आप जब अपना डाटा उसके साथ शेयर करें तो वो एनडीए आप जरूर साइन करें. जब आप वो एनडीए साइन करेंगे तो जब वो कंटेंट आपका उसके पास जाएगा तो वो भी एक फेयर में होगा कि यार ये एनडीए से हमारा कंटेंट, हमारे आइडियाज कोई ब्रिज तो नहीं होंगे, हमारा डाटा कहीं पे जाएगा तो नहीं. तो उसके पास एक फेयर होगा. Considering the shortage of time, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मजीद जरा इख्तिसार से अगर आप अपनी बात कर दें. I need to take the final. राइट. तो बस दिस इज द फाइनल थिंग कि आप जो है इन रूल्स को फॉलो करें टू प्रोटेक्ट योर डाटा. और इन चीजों को जब भी आप किसी के साथ शेयर करें तो डेफिनेट आप उनका ट्रस्ट लेवल जरूर चेक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली ले लीजिए, एनडीए साइन कर लीजिए, तो मे बी आपका डाटा जो है वो सेफ रहे और अल्लाह ताला सेफ करे. बस यही कह सकता हूँ. Thank you so much, sir. Final takeaway message, रिजवान साहब आपकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे to the audience? जी, so basically, as we have already talked about, personally identifiable information, the definition is changing, it is evolving. We need to protect ourselves. Corporations need to protect ourselves. We also need to have a clear understanding of the risks being posed, right? And we need to understand open source intelligence capabilities, social engineering capabilities, etc. And we also should know that our data is being fed to artificial intelligence as well, which is a very important development in the recent years, and the impacts of that. So broad-based, multi-stakeholder model of policy governance that needs to be incorporated. Right. Thank you. And मुजतबा साहब, आपका final takeaway message? मैं बस एक वर्ड में ही उसको एक लाइन में कहना चाहूंगा. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा. एंड प्रिवेंशन की बहुत सारी वेज हैं टू फाइंड आउट कि हमारे पर्सनल राइट्स क्या हैं, प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए. इट्स रेडीली अवेलेबल ऑनलाइन, तो स्टार्ट सर्चिंग अबाउट इट. I would request everyone के जो individuals हैं वो ढूंढना शुरू करें कि what is privacy, and they'll find out a lot of information that is publicly available online. Right. Thank you so much, gentlemen, for joining the program today. So conclusively, what we need to understand is that there is a serious need to enhance the awareness of the privacy related matters in the society and how to deal with the sensitive information. And on the second side, the role of regulators needs to be strengthened, improvised with the collective contribution, and at the end, be safe and help the society become safe. Thank you so much.
And You're welcome. looking forward to have you once again in the next programs. Thank you so much. Thank you very much, sir. Allah Thank you. Hafiz. I love Thank it. you, everyone.